सैटरडे संडे शाम है, मार्केट तो हमारी ओपन नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में लास्ट मूव कैसा था और आने वाले मार्केट का मूव कैसा रहेगा। सो डिस्कस करने से पहले लेट मी नो इफ माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू एंड माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। इफ इट्स डन, काइंडली प्रेस 1 so that we can start our session from here. लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चीजें जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में लास्ट मूव कैसा था और आने वाले मार्केट। So press 1 if you want me to start this session from here. Like everything is all right, then please mention 1 in the chat box. ओके ग्रेट। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोल्ड रैली, कूल सेट ट्रेडर्स लुक पास्ट जॉब मिस टू लूमिंग फेड टेपर्स। सो जो पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, गोल्ड पेयर्ड गेन्स, गोल्ड वाज आल्सो कॉट बिटवीन हेडवाइंड्स, इंडेक्स ड्रॉप टुवर्ड्स लोएस्ट लेवल, the gold narrative to it really pick up again, and gold failed to make a decisive move. The core inflation in the US turns and gold technical outlook. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोल्ड पेयर गेन। सो गोल्ड पेयर गेन्ड ऑन फ्राइडे आफ्टर राइजिंग मोर देन 1% ऑन यूएस जॉब डेटा मिस। तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से यूएस के जॉब्स डेटा हम लोग को देखने को मिल रहे थे, उसकी वजह से गोल्ड में एक बार अपसाइड मूव देखने को मिला, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिखी है वापस से हम लोग को इस मंथ में। तो जिसकी वजह से हम लोग को गोल्ड एक बार वापस से अप होते हुए 1% की हाइक से देखने को मिला। An investor, as investors comes to the term with the possibility that the Fed Reserve could still have enough for it to win the economy of stimulus this year। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि जो पॉसिबिलिटी है फेड रिजर्व की वापस से स्टिमुलस के लिए, अभी थोड़ा सा टाइम है इस ईयर में, और जितनी रिकवरी की उम्मीद की जा रही है अभी उतनी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। देयर इज स्टिल ग्राउंड टू रिकवर द इकोनॉमी ऑफ यूएस, और जिसकी वजह से हम लोग को इंडेक्स वापस से इसके लोएस्ट लेवल पे आते हुए दिखा, एंड गोल्ड वाज अगेन अप एट दिस लेवल। स्पॉट गोल्ड वाज अप, सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि स्पॉट गोल्ड हम लोग को अप होते हुए दिखा था आफ्टर डेटा राइजिंग। सो स्पॉट गोल्ड वाज अप 0.2% एट 1758। Yeah, 1758.86 per ounce by 1:47 p.m. EDT after hitting $1781.20, its highest level since 2020 September. Yeah, तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से हाइक देखने को मिला, हम लोग को गोल्ड देखने को मिला 1781.20 पे अपना हाईएस्ट लेवल बनाते हुए दिखा। 22 सितंबर के बाद हम लोग को ये लेवल वापस से अब देखने को मिला, जो कि इतने टाइम से नहीं देखने को मिला था। एंड यूएस गोल्ड फ्यूचर सेटल 0.1% एट 1757.4। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि गोल्ड अप होते हुए दिखा था, नो डाउट बहुत ही अच्छी तेजी शानदार रिकवरी के साथ 1781.2 के लेवल्स पे देखने को मिला। बट उसके बाद भी मार्केट में एक बार करेक्शन आई और जो अपनी क्लोजिंग दिखाते हुए मिला है वापस से करेक्शन की ओर। इसका हम लोग रियल प्रूफ देख लेते हैं अपने MT4 पे। तो देख सकते हैं जिस तरीके से ये लास्ट फ्राइडे की हम लोग को कैंडल देखने को मिली है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट फ्राइडे, तो मार्केट की ओपनिंग देख सकते हैं 1754.75, अपना हाई जो बनाया 1781.12, 1753.18 का लो बनाते हुए 1756.21 पे क्लोज हुई है। देख सकते हैं मार्केट कितनी अच्छी रिकवरी के साथ थी। अगर क्लोजिंग यहीं कहीं हम लोग को 80-85 के आसपास दिखाती, तो वी कुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि वापस एक बार 1800 के टारगेट देखने को मिलेंगे। बट व्हाट हैपेंड, मार्केट ने एक बार हाई बनाया और दैट वाज द टाइम जो हम लोग की यूएस सेशन की ओपनिंग थी, 6 बजे का टाइम था, और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हम लोग को देखने को मिले थे। रिकन्फर्मेशन के लिए हम लोग आ जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पे और देख लेते हैं लास्ट वीक का डेटा, जो कि हम लोग को लास्ट फ्राइडे का देखना है। जस्ट अ वाइल, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अक्टूबर 8 या ओके फ्राइडे डेटा हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे डेटाज थे which was average hourly month to month, non-farm employment change,
एंड इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा। तो हम लोग एवरेज आर्ली मंथ टू मंथ की बात कर ले तो हम लोग का जो प्रीवियस डेटा था 0.4%, एक्सपेक्टेशन भी सेम थी हमारी 0.4% की। एंड व्हाट वाज द यूजुअल इम्पैक्ट एंड मेजरमेंट, तो मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो changes the business price pay for labor excluding the farmer industry, actual greater than forecast हमारी करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग था। तो देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन 0.4% की थी और रिजल्ट जो है 0.6% के, दैट इज एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट और हमारी करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग होते हुए, राइट। तो इसकी इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो हम लोग के गोल्ड को गिरना चाहिए था, बट व्हाट हैपेंड सडनली, तो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात कर ले हम लोग। सो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की अगर हम लोग बात कर ले, सो मेजरमेंट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ एक्सक्लूडिंग द फार्मर इंडस्ट्री, एंड previous were 366,000, expectations 490,000 की, but actual results were very low than the expected and the previous because it was at 194,000। एंड देख सकते हैं एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट हमारी करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग था, बट क्या देखने को मिला, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट, और जिसकी वजह से गोल्ड एक बार अप होने की संभावना देख सकते हैं। हमारी दोनों न्यूज रेड सिग्नल के साथ थी, तो दोनों कंट्राडिक्ट कर रही थी, एक अप एक डाउन। तो क्या होने वाला था ये डिसाइड करती है हमारी लास्ट न्यूज। ओके, सो इसके बाद है हमारी तीसरी न्यूज, जो कि तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे मार्केट के लिए थी। और तीसरी न्यूज जैसे ही हम लोग को आती हुई दिखी, दैट वाज द न्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस 5.2%, एक्सपेक्टेशन 5.1% की, एक्चुअल रिजल्ट 4.8%, यानी कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट देखने को मिला। एंड एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो हम लोग के गोल्ड को एक बार डाउन जाना चाहिए था, बट हमारे गोल्ड ने क्या किया, बहुत ही ओचीदा मूव दिया, क्योंकि गाइस देख सकते हैं पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड एक बार डाउन होते हुए दिखेगा, बिकॉज टू न्यूज वाज डाउन एंड वन ओनली वन न्यूज वाज अप फॉर द डे। एंड मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरी तरीके से गोल्ड को ऊपर कर दिया इंस्टेड ऑफ की डाउन करने के। तो दैट वाज द सरप्राइजिंग मूव इन द मार्केट, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट में मूव दे रहा है, गोल्ड किसी भी न्यूज का सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जाते हुए वापस से करेक्शन की ओर आते हुए दिख रहा है। इस टाइम भी हम लोग को देख सकते हैं कि 82 तक के रिजल्ट देखने के बाद पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक बार अपसाइड मूव करती है, अब 1800 के लेवल्स ब्रेक करेगी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने वापस से मूव लिया और एक बार करेक्शन दिखाते हुए मिलती हुई दिखी। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर डिस्कशन पॉइंट्स, एंड डिस्कशन पॉइंट्स में हम लोग देख रहे थे स्पॉट गोल्ड वाज अप 0.2% at 1758.86 and at 147 p.m. EDT. US gold future settle down 0.1% at 1757.4, सेटल हम लोग को जो होते हुए दिखा है 1757 के आसपास अपनी क्लोजिंग बनाते हुए। इसके साथ यूएस एम्प्लॉयर्स added just 1,94,000 job in September, well below expectation। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से बिलो रिजल्ट आते हुए दिखे थे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वापस से हम लोग को बढ़ती हुई दिखी, और जिसकी वजह से गोल्ड एक बार डाउन जाते हुए देखने को मिलने वाला था, लेकिन गोल्ड ने पूरी तरीके से मार्केट के मूव को नेग्लिजिबल करते हुए अपसाइड पोजीशन दिखाते हुए 1782 तक के लेवल्स दिखाए। सो आई होप अभी तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं। Okay, but upward revision to prior months data. Yep. Data mean the economy has now made up for the half of the jobs deficit it faced in December. So gold gained sharply. Gold gained sharply as the data as first appeared to the downbeat, but internals of the report seemed overall to said not so bad, said the Jim Wyckoff, senior analyst at Kitco Metals.
This drove expectations that the Fed will continue its path of wanting to taper monetary policy sooner rather than later, leading to the retreat in gold, although yet another poor jobs report next month could change that, Wyckoff added. Gold was also caught between headwinds. So gold was also caught between headwinds from higher US Treasury yields and some support from a slightly weaker dollar. तो हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड पूरी तरीके से अपसाइड मूव करते हुए दिखा. द रीजन बिहाइंड इट कि हायर ट्रेजरी इल्ड्स देखने को मिले और जहां तक सम सपोर्ट हम लोग को देखने को मिला स्लाइटर डॉलर की वजह से, क्योंकि ट्रेजरी इल्ड और हमारा गोल्ड एक साथ मूव करते हुए दिखता है और जबकि यूएस डॉलर और गोल्ड हमारा कंट्राडिक्ट करते हुए दिखता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से हमारे डॉलर ने वीकर होकर के पूरी तरीके से कंट्राडिक्ट किया, मार्केट को एक बार वापस से राइज करने में पूरी तरीके से हेल्प की. The gold market now seems to expect a tapering announcement at some point this year, said Standard Chartered analyst Suki Cooper. तो हम लोग देख रहे हैं गोल्ड जो है अब टेपरिंग की उम्मीद कर सकता है इस मंथ और किसी भी इस ईयर किसी भी टाइम पे, और वही एक टाइम होगा जब हम लोग को टेपरिंग की अनाउंसमेंट होते हुए दिखेगी और गोल्ड मार्केट पे पूरी तरीके से हाई फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी. So the downside appears well supported. However, the downside appears well supported given the demand response from the physical market. Reduced stimulus and the higher interest rate lift bond yields, translating into increased opportunity cost of holding non-yielding bullion. The gold narrative to really pick up again, for the gold narrative to really pick up again, we would need an impulsive rally above 1950 to 1960. ओके सो हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग को अपसाइड मूव देखने की उम्मीदें हैं, तो अपसाइड मूव देखने के लिए हम लोग को 1950 और 1960 की रैली को पार करना पड़ेगा. एंड देन कुड वी से कि हाँ अब गोल्ड हमारा ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है. एल्स अभी तो हम लोग नहीं कह सकते कि गोल्ड का मूव बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा तेजी के साथ देखने को मिलेगा. So, or the pre-COVID vaccines highs and that would require a significant catalyst. Not in the market right now, said a New York-based precious metal trader. So XAO USD on the back foot as NFP failed to alter taper prospects. So gold spiked above 1780 on Friday but lost its bullish momentum. तो जैसे कि हम लोग डिस्कस किए जा रहे हैं कि फ्राइडे का मूव बहुत ही पेचीदा था, जिसमें कि गोल्ड ने एक बार 1780 तक के लेवल बनाते हुए दिखे और उसके बाद वापस से एक बार करेक्शन दिखाई है हमें. Despite the disappointing September job report, dollar stays resilient. And focus shift to the US September CPI inflation data. तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब पूरा फोकस जो था हमारा CPI के इन्फ्लेशन डेटा पे था और जिसकी वजह से गोल्ड पूरी तरीके से डाउन आते हुए दिखा था हमें. After ending the previous weeks on a firm footing, the XAU USD pair continues to edge higher on Monday and reached a day drop of 1770. तो हम लोग मंडे की बात करें तो मंडे को गोल्ड ने एक बार अपसाइड मूव दिखाया था 1770, आई गेस 1769 तक के टारगेट्स दिखाए थे. यस इट वाज 1769 एंड वापस से एक बार 1780s के लेवल को टच करते हुए करेक्शन दिखाते हुए 1750 तक के लेवल पे क्लोज हो 1756 तक के लेवल पे क्लोज होते हुए दिखाया. अब डिपेंड करता है कि अगला मूव मार्केट का कैसा देखने को मिलता है हमें मंडे मार्केट में. सो गोल्ड स्ट्रगल टू एक्सटेंड, nevertheless gold struggled to extend its rebound amid dollar resilience and formed a horizontal trading channel with a lower limit at 1750. Although the pair broke above that channel on Friday and touched a 15-day high of 1781. तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से गोल्ड ने अपना पेयर ब्रोक किया फ्राइडे को और 15 डेज के बाद अपना हाई बनाते हुए 1781 के लेवल पे देखने को मिला. With the initial reaction to the disappointing September job report from the US, it retreated below 1770 ahead of weekend. So here we are talking about what happened last week. So the risk-averse market environment at the start of the week helped the precious metal find demand. The ongoing energy crisis and heightened concerns over US lawmakers falling to come to terms to raise the debt limit caused investors to seek refunds.
The only data from the US showed on Monday that factory orders increased by 1.2% on a monthly basis in August, but this reading received little to no market reaction. तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग को एक डेटा देखने को मिला था कि मंडे को हम लोग को फैक्ट्री ऑर्डर्स 1.2% से राइज करते हुए देखने को मिले थे मंथली बेसिस पे फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, बट उसके बाद हम लोग बात कर ले तो गोल्ड में कोई ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिला, स्लाइट चेंजेस के बाद गोल्ड वहीं पे रिएक्ट करता हुआ दिखा हमें। डिस्कस करेंगे आगे की चीजें लाइक इंडेक्स टॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल, व्हाई इट वाज सो एंड व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट, बट उसके पहले एक बार क्लियर कर दे, अभी तक सब कुछ क्लियर है? इफ यस काइंडली प्रेस 15 so that we can continue from here. Kindly mention 15 so that we can continue. Please press 15 so that we can continue our session from here only. Okay, so यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल. Reflecting the dismal market outlook, the S&P 500 index dropped to its lowest level since late July at 4,278 on Tuesday. However, the greenback also managed to outperform its rivals as a safe haven and kept XAU USD upside. हम लोग देख रहे हैं S&P 500 का इंडेक्स जो है पूरी तरीके से अपने लोस पे आते हुए दिखा है, जुलाई के बाद अपने लोस बनाते हुए, जिसकी वजह से पूरी तरीके से इसने चांस दिया है अपने गोल्ड को एक बार वापस से अपसाइड जाने के लिए. On Tuesday, the ISM Services PMI arrived at 61.9 in September compared to analyst estimate of 60. तो ISM Services PMI की बात करें तो एक्चुअल हम लोग को 61.9 देखने को मिला और एक्सपेक्टेशन जो थी 60 की थी, बट इसकी वजह से गोल्ड को एक बार अपसाइड जाना चाहिए था, बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने पूरी तरीके से इग्नोर किया इस डेटा को भी और गोल्ड अब की जगह वापस से हम लोग को करेक्शन की जो ओर जाता हुआ दिखाया. On Tuesday, okay, so on Wednesday, the Automatic Data Processing, that is ADP, Research Institute announced that the private sector employment is in the US rose by 5,68,000, surpassing the market consensus of 4,28,000. इसके साथ the US Senate, so in the meantime, the US Senate passed the bill to raise the debt ceiling by 408 billion through November, easing concerns over a possible default. Moreover, Russian President Vladimir
Vladimir Putin said that they will be ramping up gas output to ease the pressure on energy prices in Europe and provided an additional boost to the risk sentiment. Gold failed to make a decisive move, so although major global equity index gained traction in the second half of the week to mirror the positive shift witnessed in risk appetite, gold failed to make a decisive move in either direction as US Treasury bond yields supported the dollar. The benchmark 10-year Treasury yield gained more than 3% on Thursday and reached its highest level in more than 4 months, above 1.6% on Friday. The US Bureau of Labor Statistics. So, finally, the US Bureau of Labor Statistics reported that the non farm payrolls rose by 1,94,000 in September. This reading missed analyst forecast of 5 lakh by a wide margin and triggered a USD sell off. However, the underlying details of the publication revealed that August print got revised higher to 3,66,000 from 2,35,000 and unemployment rate declined 4.8% from 5.2%. तो हम लोग देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम होती हुई दिखी और जिसकी वजह से गोल्ड हम लोग को वापस से करेक्शन की ओर जाता हुआ दिखना चाहिए बट गोल्ड ने पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़े और एक बार वापस से हाइक बनाते हुए दिखाया. The US dollar index, which was dropped to a daily low of 93.94 after the NFP data, didn't have a difficult time rebounding above 94 and kept gold upside. तो हम लोग देख रहे हैं कि 93.94 का लो बनाते हुए जब हम लोग को देखने को मिला तो गोल्ड अपना अप बनाते हुए 1780 के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा टाइम नहीं दिया अपने लो को बनाने के लिए और उसने पूरी तरीके से गोल्ड को एक बार डाउन कर दिया और यूएसटी को एक बार 94 पे. So the US Bureau of Labor Statistics, there won't be any high impact data released at the start of the week. On Tuesday, the August job report from the UK and the ZEW survey from the Germany will be featured in the European economic ticket, which are unlikely to have a significant impact on XAU USD's movement. On Wednesday, the US Bureau of Labor Statistics will release the Consumer Price Index data for September. Investors forecast the annual CPI to tick up to 5.4% from 5.3% in August. The core inflation in the US turns. So, even if the core inflation in the US turns out to be softer than expected in September, this report by itself is unlikely to change the market's view on the Fed's tapering plan. In fact, the market reaction to the September labor market report showed that the expectation for the reduction in the asset purchases remain intact. Moreover, investors could opt out to remain on the sidelines before the FOMC published the September meeting minutes later in the day. टेक्निकल आउटलुक की बात करते हैं. सो द टेक्निकल आउटलुक रिमेन बेयरिश विद द गोल्ड फॉलोइंग टू ब्रेक अबव द 20-day सिंपल मूविंग एवरेज फॉर द 18th straight trading day. Additionally, this relative strength index indicator on the daily chart stayed slightly below 50, confirming the view that sellers are looking to remain in control of XAU USD's action. On the downside, the initial support is located at 1750. तो हम लोग देखते हैं डाउनसाइड हम लोग को जो सपोर्ट देखने को मिला है 1750 का देखने को मिल रहा है और अगर वो ब्रेक होते हुए दिखता है तो 1730 वुड बी द नेक्स्ट लेवल एंड आफ्टर दैट 1720 हमारा सपोर्ट होगा एक सितंबर का लो. सो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और इसके बाद हम लोग अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे आ जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक हम लोग को कौन से डेटास देखने को मिल रहे हैं. तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे तक के डेटास देखेंगे. ओके, सो हम लोग बात करते हैं अक्टूबर 11 मंडे की बात करते हैं. तो मंडे को हमारा बैंक हॉलीडे है यूएसडी में भी, तो जिसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलने वाला है. एक साइडवेज मूवमेंट दिखाती हुई मिलेगी गोल्ड. ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे हमारे पास जो डेटा है यूएसडी के 3:30 एक है NIFP स्मॉल बिजनेस इंडेक्स, इसके साथ जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग एंड FOMC मेंबर क्लैरिडा स्पीक है 9:15 बजे. 10 बजे FOMC मेंबर बोस्टिक स्पीक और 10:30 बजे 10-year बॉन्ड ऑक्शन.
वेनसडे की बात करते हैं तो वेनसडे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीपीआई और कोर सीपीआई के डेटाज है शाम को 6 बजे, और इसके साथ 10:30 बजे 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शन एंड 11:30 बजे एफओएमसी में मीटिंग मिनट्स। थर्सडे की बात करते हैं तो थर्सडे हमारे पास जो डेटा है शाम को 6 बजे इंपॉर्टेंट डेटा पीपीआई मंथ टू मंथ, कोर पीपीआई मंथ टू मंथ और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। 7:30 बजे हम लोग को एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक, नेचुरल गैस स्टोरेज, इसके साथ 8:30 बजे एफ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और 10:30 बजे एफओएमसी मेंबर बार्किन स्पीक देखने को मिलने वाला है। और 10:30 बजे की बात करें, सॉरी फ्राइडे की बात करें तो शाम को 6 बजे हम लोग को कोर रिटेल सेल्स मंथ टू मंथ, रिटेल सेल्स मंथ टू मंथ, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और साथ ही 7:30 बजे प्रेलिम यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट, बिजनेस इन्वेंट्रीज मंथ टू मंथ, ये देखने को मिलने वाले हैं। तो ये हमारा वीक जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे गोल्ड के नज़रिए से और यूएसटी के नज़रिए से। आगे आके हम लोग netdenia.com के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक बार क्लियर करना चाहेंगे अभी तक सब कुछ क्लियर है? अगर हाँ तो काइंडली प्रेस 25 इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस कर सकें। ओके, सो goldnetdenia.com की हम लोग बात कर रहे हैं तो goldnetdenia.com पे हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस मार्केट जो हम लोग को क्लोज होती हुई 1756.63 के लेवल्स पे देखने को मिली है। और 1.49 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद होती हुई दिखी है प्रीवियस क्लोजिंग जो देखने को मिली, और 0.08% की तेजी के साथ। रेंज जो देखने को मिली 1752.20 का लो बनाते हुए 1781.20 तक का हाई बनाया, और देख सकते हैं ओपनिंग जो थी 1754.95 के लेवल्स पे थी। उसके पहले की क्लोजिंग 1755.14 के लेवल्स की। ईयर वाइज चेंजेस की बात करें तो 138 पॉइंट्स की गिरावट के साथ अभी गोल्ड हम लोग को मूव करते हुए दिख रहा है। ईयर वाइज परसेंटेज चेंजेस की बात करें तो 7.30% की गिरावट के साथ। 52 वीक्स हाई 1965.55, 52 वीक्स लो 1676 के लेवल्स पे। ग्लोबल मार्केट का हाल जान लेते हैं कि फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट कैसे क्लोज होती हुई दिखी है। तो देख सकते हैं डो जोन्स 30 हम लोग को नेगेटिव होते हुए दिखा, S&P 500 भी नेगेटिव, बिटकॉइन पॉजिटिव रहा, यूरो स्टॉक्स नेगेटिव रहे। इसके साथ डेक्स 30 नेगेटिव रहा, निकाई 2025 नेगेटिव रहा। निफ्टी 50 पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 17,895 के लेवल्स पे। हैंग सेंग पॉजिटिव,
ASX 200 भी पॉजिटिव रहा। क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों ही पॉजिटिव क्लोज हुए। यूरो यूएसडी हमारा नेगेटिव रहा, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से गोल्ड हमारे जो है क्लोजिंग अपनी पॉजिटिव होते हुए दिखाया। सिल्वर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और आ जाते हैं हम लोग एफएक्स स्ट्रीट पे। So XAU USD raises NFP inspire gains, returns to 1760 area. So following the impressive upsurge to a fresh 15-day high of 1781, the XAU USD pair lost its traction and paired the majority of its daily gains with the benchmark 10-year US Treasury bond yield, renewing multi-month lows, month highs above 1.6%. Looking at the technical picture, so XAU USD has been oscillating in a familiar trading range since the beginning of this week. This makes it prudent to wait for a sustainable break in either direction before placing aggressive bets. तो हम लोग देख रहे हैं जैसे वीक स्टार्ट होते हुए दिखा था, गोल्ड हम लोग को एक रेंज में मूव करते हुए दिखा और उसी रेंज में ही अभी तक क्लोज होते हुए भी दिखा है। तो अभी एक सस्टेनेबल ब्रेक अबव ब्रेक डाउन की उम्मीद की जा रही है। किसी एक डायरेक्शन में मूव जो देखने को मिलेगा दैट वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट और उसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड से ब्रेक करता है तो 1730 1720 तक के लेवल्स, और अगर अप साइड से ब्रेक करता है तो 1800 तक के लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं मार्केट के लिए डार्ट पे। So this makes it prudent to wait for a sustained break in either direction before placing any aggressive bets. Hence, any subsequent move might continue to face resistance near the 1770 region, or and 1.5 week tops test on Monday, and the next relevant hurdle is placed near the 1774 to 1775 region ahead of 1783 to 84 area, above which bulls are likely to come back, aim back to reclaim the 1800 down figure. The latter coincides with the very important 200-day simple moving average and should act as a key pivotal point for short-term traders. So on the flip side, 1750 to 1748 region, or lower the boundary of the week trading range, now seems to have emerged as immediate strong support. A convincing break below will set the stage for a slight lower towards the 1729 immediate support en route September monthly swing lows around the 1722 to 21 region. Some follow-through selling would turn gold vulnerable to accelerate the downward trajectory towards challenging the 1700 mark before eventually dropping its multi-month lows around this 1687 to 86 region touched on August 9. बात करें फंडामेंटल ओवरव्यू की, सो गोल्ड गेन सम पॉजिटिव ट्रैक्शन ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक एंड रिकवर्ड अ पार्ट ऑफ इट्स प्रीवियस लॉसेस. The XAU USD maintained its bit tone heading into European session on the refreshed daily tops around the 1760 region in the last hour, though lacked follow through. Concerns pertaining to China's indebtedness property sector resurfaced after Fanatiza Holdings, a mid-sizer developer, didn't make the payment of $206 bond maturing on October 3, triggering a formal default. This in turn was seen as a key factor that extended some support to the safe haven precious metal, though a combination of factors kept gain. So, temporary true in the debt ceiling standoff is in the US Congress relieved concerns of a possible government debt default later this month and boosted investors' confidence. In fact, the Senate voted 50 to 80 to extend the debt ceiling until early December. This bill will now be sent to the House of Representatives for the approval before it can send to the President Joe Biden for his signature. The development triggered a classic risk on move. In the global equity markets. Apart from this,
Prospects are early policy tightening. Fed the taper should hold traders from placing aggressive woods bets around the non-yielding yellow metal. Investors seem convincing that the Fed will begin rolling back its massive pandemic era stimulus as sooner as November. The market also seemed to have started pricing in the prospects for interest rate hike in 2022 amid worries that the continuous range surge in crude oil or energy prices will stoke inflation. Hawkish Fed expectation pushes the yield on the benchmark 10-year US government bond to 4-month tops, closer to the 1.60% threshold, which continued underpinning the US dollar. This could further act as a headwind for the dollar denominated commodity, including gold, as investors move sideline ahead of the closely watched US monthly employment figures. The popularly known NFP report is due for release later during the early North American session, as expected is show that the economy added 488K new jobs in September. Meanwhile, the unemployment rate is expected to edge lower to the 5.1% during the reported month from 5.2% in August. Nevertheless, the data will influence the market expectations about the next policy move by the Fed. This will drive the USD in the near term and provide the fresh directional impetus to the gold prices. सो देख सकते हैं 1 वीक के डेटा के लिए एवरेज फोरकास्टिंग 1767 और बायस हमें बुलिश देखने को मिल रहा है और फॉर 1 मंथ इट इज 1747.92 बायस बुलिश एंड फॉर 1 क्वार्टर इट इज 1777.69 बायस हम लोग को बेयरिश देखने को मिल रहा है. आते हैं हम लोग अपने गोल्ड न्यूज़ रोटर्स पे. उसके पहले एक बार जानना चाहेंगे कि अभी तक सब कुछ क्लियर हुआ है. अगर हाँ तो काइंडली प्रेस 40 इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस कर सकें reuters.com से.
ओके सो हम लोग आ जाते हैं गोल्ड न्यूज रोटर्स डॉट कॉम पे. So precious gold rally could cools as traders look past jobs missed to the looming Fed taper. So US could job growth slows sharply in September. Platinum sees best week since June 25. Platinum snapped for 4 straight weeks of decline. Gold paired gain on Friday after rising more than 1% on US job data miss. And as investors came to terms with the possibility the Federal Reserve could still have enough fodder to win the economy of this stimulus this year. Spot gold was up 0.2% at 1758.86 per ounce by 1:47 p.m. EDT after hitting 1781.20, its highest level since September 22. US gold futures settled down 0.1% at 1757.4. US employers added just 1,94,000 jobs in September, well below expectations. But upward revisions to the prior month's data mean that economy has now made up for half of the job deficit in the faced in December. Gold gained sharply as the data at the first appeared to the downbeat, but internals of the report seemed overall to be not so bad. This drove expectation that the Fed will continue on its path of wanting to taper monetary policy sooner rather than the later, leading to the retreat in gold, though yet another poor jobs report next month could change that. Gold also caught between headwinds from higher US Treasury yields and some support from a slightly weaker dollar. So the gold market now seems to expect a tapering announcement at some point this year. However, the downside appears well supported given the demand response from the physical market. Reduced stimulus and a higher interest rate lift bond yields, translating into increasing opportunity cost of holding non-yielding bond. For the gold narrative to really pick up again, we would need an impulsive rally above 1950 to 60 or the pre-COVID vaccines high, and that would require a significant catalyst not in the market right now. But auto catalyst, platinum and palladium held on to gains, rising 4.1% to dollar 1019.74 and 5.8% to dollar 2073.52 respectively, likely buoyed by the positive fine print in the jobs report. Spot silver rose 0.5% to dollar 22.70. सो हम लोग आ जाते हैं एक बार अपने लाइव चार्ट्स पे और हम लोग देख लेते हैं एक बार गोल्ड का डेटा. Okay, so we are here with XAUUST. सो वनडे के डेटा हम लोग देखते हैं एक बार कि वनडे का मूव कैसा होता हुआ दिख सकता है. ओके सो हम लोग एनालाइज कर लेते हैं एक बार. तो मोमेंट पूरा हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं एक बार, तो ट्रेंड लाइन अगर हम लोग फॉर्म करते हैं तो देख सकते हैं पूरी तरीके से मार्केट डाउन होती हुई दिख रही है.
ऑल्दो एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग जिस तरीके से डाउन दिखाई है मार्केट में, ऊपर साइड बायर्स नहीं देखने को मिले और वापस से करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में अभी हम लोग अपसाइड की उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट की हुई है यहाँ पे। ऑल्दो रिकवरी के चांसेस यहाँ से बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग मूव लेंगे मार्केट में जब भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि रिकवरी के चांसेस आते हुए दिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से एक कंसोलिडेशन आते हुए दिखा है 1720 के लेवल से 1771 1781 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। और इस कंसोलिडेशन के बाद देखते हैं एक बार अपसाइड मूव लेता है या डाउन साइड लेता है। लेकिन उम्मीद पूरी है कि एक बार डिप होती हुई वापस से देखने को मिल सकती है, तो ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं और हम लोग यूज़ करें अपने फिबोनाची लेवल को। एक बार हम लोग फिबोनाची लेवल यूज़ कर लेते हैं इस लेवल पे। तो देख सकते हैं जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है 1738 39 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अगर देखने को मिलते हैं तो। अदरवाइज एक अच्छा रेजिस्टेंस हमारे पास है 1772 1773 के लेवल्स पे। अगर वो ब्रेक करने में पूरी तरीके से एबल हो जाती है और क्लोजिंग अच्छी रहती है 1773 के अबव, तो हम लोग को अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है मार्केट का। फिलहाल 15 मिनट का मूव एक बार देखें तो देख सकते हैं मार्केट पूरी तरीके से अप सिग्नल्स के बाद करेक्ट होती हुई अपने ओपनिंग के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिली। गोल्ड न्यूज किटको पे आ जाते हैं। So gold struggle continues. So the gold market continues to struggle in obscurity, unable to hold material gains above 1750 an ounce. The gold market can't even hold on to the gains following in the second month of disappointing US labor job market data, while precious metal managed to hit a low 2 week high briefly. It could not break resistance at 1780 an ounce. The market is suffering because investors remain to focus on US monetary policy. Although September's non-farm payroll missed the expectations, many economists have said that it still won't keep the Federal Reserve from reducing their monthly bond purchases by the end of the year. The Federal Reserve is on the track to shift monetary policy, and that will continue to weigh on gold prices. Rising inflation pressures haven't even been able to help gold prices. We are seeing a global energy crisis driving oil and gas prices to multi-year highs. As a result, some economists expect inflation pressure to be a lot stricter than central banks anticipate. Rising inflation is not providing any support for gold because it's leading market players to price in more aggressive auction from central banks. The CME Fed Watch tool already shows that market pricing in a small chance of a rate hike by June 2022. But before all the gold investors start throwing in the towel and liquidating their assets, I would like to point out that a lot can happen in next 12 months or so. I think markets are overestimating just how aggressive the Fed and the central banks, like the European Central Bank, can be when it comes to the tightening interest rate. One report that caught our attention this week was from Jefferies Investors Group. Despite all the near-term weakness and volatility, the investment firm remain a long-term bull on gold. They said that they see gold prices rising to $5,500 an ounce in long term, as it becomes evident that it is easier for the central bank to enter unorthodox monetary policies than it is to exit them. The long term view here remains as the same as it has been for many years, that is, the
G7 central banks, including most importantly the Federal Reserve, will not be able to exit from unconventional monetary policy in a pinching manner and will ultimately remain committed to ongoing central bank balance sheet expansion in one form or another. The Catalyst said in their research. Bloomberg analysts also remain bullish on gold. In this October commodity report, Bloomberg Intelligence senior commodity strategist Mike McClone said he says gold back to its peak soon. It's only been about a year since gold last peak, and we believe it should a relatively short manner of time to revisit. Gold has outperformed fast major commodities in the past 20 years. This is for the week. For all, okay. तो हम लोग आ जाते हैं वीडियो न्यूज़ पे और हम लोग देखेंगे एक क्लिप. The upcoming Future Blockchain Summit coverage. हम लोग देख रहे हैं अक्टूबर 10 की एनालिसिस. उसके पहले The upcoming Future Blockchain Summit. एक बार अक्टूबर 9 की, ओके अक्टूबर 7 की है. वेट, yeah, we are moving towards this. We're talking about the silver price and the lack of action that we've been seeing all summer with Jeff Christian, managing partner of the CPM Group. Jeff, welcome back to the show. I know you were traveling last week, and I'm happy to see that you're back. I'm going to start by showing you a chart of the silver market here. This is today's silver price. So not a lot of action today, as we're speaking on Tuesday. Of course, this extends to the rest of the earlier this summer as well. Now, interesting commentary I've received from some other silver analysts I've spoken to this year, and a lot of people have told me that if you look at the COMEX, for example, there's been many periods where you see a large amount of volume happening overnight, which coincides with a dramatic drop in the price. This may suggest that traders are either from financial institutions or otherwise are dumping huge amounts of lots usually in an illiquid period of time on the markets. So they're smashing down the price, so to speak. Maybe that's keeping the price down. Can you comment on that? Well, first off, I wouldn't say that anything's keeping the price down. The price is about $22. It's up sharply from a year ago or 2 years ago. So I'm not sure that the price is being kept down. Second thing is that what you're talking to, and we've supplied you some data about this. You have conflict entrepreneurs, people who try to sell precious metals based on fear and ignorance, and they pick one or two periods and they say, "Oh, if you look at it, there's this large amount of trading volume on the COMEX in the Asian trading hours when the market's illiquid, and it has smashed the price down." And what they're doing is they're being very selective in their use of information and data. Because if you go back, and we've done the work and we presented some of the results at the Silver Symposium and other places, if you just take a slice of the market, January and February of this year, looking at the March COMEX contract, during those 2 months, there were 5,287 10-minute periods of trading. During those periods of time, the vast majority, about 96%, actually occurred with 2,537 or fewer trades in a 10-minute period. And you look at the outliers, and there were like 207 or 209, I think 207 periods of time with third standard, fourth, fifth, sixth standard deviation volumes. So you look at those periods of time and you say, there are 207 periods of high volumes. These guys are focusing on one and saying, look, it must be some nefarious bank smashing the market down. They're not looking at the entire data set, and they're not looking at the trading patterns on either side of that high volume period.
if you look at the data, what you find is that of 203 periods of time, 97 of them were periods where the trading volumes were rising and were abnormally high, more than third standard deviation or greater. 97 of those were corresponding to rising prices, and 90, I have to put my glasses on, 95 of them were corresponding to down prices. Then you say, okay, well, let's talk about this. Of the periods when the price was falling, 92% of those periods actually occurred in New York or North American trading hours and not Asian trading hours. And if you look at the periods of rising prices, you see that about 50% of them occurred in Asia and 50% occurred here. Then you stop and you say, wait a second, you're saying that the major markets are closed in Asia, but China and India are the major markets for gold and silver and are very large participants in the COMEX. And then you look at the trading data and you look at all 5,287 periods, and you find that Asia is not a particularly, the Asian trading hours are not a particularly illiquid time compared to the North American trading volumes. So by looking at all of the data, you can understand a little bit more about how commodities futures trade. And you can see that this guy or these people who are conflict entrepreneurs who are trying to feed the fears of investors, they're selectively picking one or two periods of time and they're ignoring the broader market. Then you can say, okay, what about gold? What about other commodities? And you find similar trading patterns. So what you're doing is you're taking one slice and you're saying, okay, this slice of bread is moldy, and it's not. The whole loaf is moldy, or vice versa. They're very selectively picking data to try to support their argument, and they're ignoring 99.9% of the data that refutes their argument. COMEX data doesn't tell you where those trades are coming from, does it? Not the publicly available data. Okay, well, do you have an idea as to who's making these trades in high volumes? Well, that's the other thing that, I've always known this, but I've never said it because these guys are, we should be talking about something important, not this. This is just a giant distraction. They say that banks are the high volume traders, but if you look at high volume trading on commodities, it's the institutional investors, not the banks, that really are the high volume traders. And the institutional investors say, if these guys want to blame the banks and say that the banks are the guys coming in with large volumes, let them. They don't, we really don't want to know, we really don't want them focusing their ire on us. Let them blame the banks for our behavior. Their behavior for what? Their behavior for large volume trading. Okay. Which is, would that be unusual? First of all, is that unusual behavior for commodities, for any commodity? It's universal. It's universal across markets. Okay. But, so what I ask you, Jeff? It's something that anybody who's involved in commodities trading ought to know. Somebody might ask you, Jeff, if the information that you're citing is not publicly available, where are you getting the information from that institutional investors or traders are making these high volume trades? There is a fair amount of academic research on commodities futures that people can go on the internet and search for. Say, good research on commodities, and you'll probably get a whole bunch of studies about that. I mean, there's a tremendous volume of data, of research based on real data that's been made available to researchers, to the government, to governments, and to researchers, academic and industry analysts. Generally speaking, would you consider the silver market in the futures markets to be a very illiquid market? Would you characterize that market using that word? I'm sorry, what was the question? Do you think silver is an illiquid market to be trading in? It depends on what you're comparing it to. Silver is highly illiquid compared to stocks or treasuries or gold. The silver market's probably 1/10 of the liquidity of gold. But if you compare it to platinum or palladium,
or some other commodities, it's an extremely liquid market. Right. So it's not a highly liquid market, and it's what economists call extremely asymmetrical, in that the information availability is skewed and it's not equally distributed across the markets. So you'll find people who say, well, the efficient market theory says that silver options and gold options should be priced more cheaply than they are. Why is that? And the answer is no. The efficient market theory says that if this market were efficient, by which economists mean the information was equally and symmetrically dispersed across the market, then the options prices would be lower. But all markets are to some extent asymmetrical, and the silver market is probably much more asymmetrical than the equity markets, for example, because the equity markets have the SEC saying you've got to disclose all of this information. So the information is, fair, and then there were fair disclosure laws that came into play 20 years ago. So you have a more symmetrical distribution of information in equity markets, whereas in the silver market and the gold market, there's a tremendous amount of privacy in the people are physical telling me market. People are telling me also that the banks have a tremendous amount of short positions on paper silver. Is that true? The short positions are hedges of the long positions they have in the physical market. Yes, but do they have an incentive to be shorting, to be net short the metals right now? No, they're that's not what net short. This is another thing that if you don't know what you're talking about, you can make that conclusion, right? They are not net short. Most banks and trading companies have credit provisions in their credit agreements that say they go home at some point in any 24-hour period, they are net 100% hedged. And the credit providers say you cannot do this. And we've talked about this for years, and we've shown how, a bank will have a very large physical silver market position, and it will hedge some of that in the futures market by shorting the futures. So it has a short futures position. In addition to that, investors on the futures market basically want to be long, especially in silver. They're almost always long. There was a short period of time a few years ago where they went net short. And somebody has to take the other side of that contract. And that happens to be a futures commission merchant, i.e. a bank. So those short positions on the futures market are actually hedges of physical positions. Now, the physical metal that they own, they lease out. They lease it to producers, smelters, refiners, fabricators, wholesalers, retailers, and a host of other companies, right? And banks make their money not only in silver and gold, but in dollars by charging a small fee on large volumes of transactions. So if a bank is charging 3% interest to lend a fabricator silver, and the price is $10, well, he's going to make 30 cents. If the price goes to $30, he's going to make 90 cents. So the banks actually make better. When Sprott tried that whole scheme back in 2010, 2011, let's bankrupt JP Morgan by driving the silver price up. JP Morgan had record profits in its silver contracts in its silver business that year, because the price did go from like $16 to $38, and they were making 129% more on their leases, which is where they make their money, than they had been at $16. And because they're fully hedged, they have no price exposure per se, in that if the price rises, they don't lose money. If the price falls, they don't lose money. The price rises or falls, they don't make money on the price change. But because they're leasing things out, they're leasing it out at a percentage of a higher price. So they actually benefit from higher prices. So when you look at the argument, I mean, if you went to a trial and you said, Your Honor, look at the evidence, this guy is shorting the market to suppress the price. The legal system would say, wait a second, he has a vested interest in higher prices.
He makes more money at higher prices. So you're telling me that your conspiracy is predicated on the concept that this guy is working in his own worst interest. Because a bank that is a bullion bank makes more money at higher prices, not lower prices. I understand. And if you understand that, then you can say, Jesus, David, we wasted 15 minutes here. We should have been talking about something important, because this is all nonsense. Well, I appreciate your clarification. I think a lot of people in the silver market would still be benefit from some. They're not actually in the silver market. They're not actually in the silver market. They're just casual observers. Regardless, I'm going to end on your forecast now. $30 silver. Can we get there before December 31st? We can. I doubt that we will. I mean, our forecast right now, we'll be coming out with a new forecast on Thursday with our precious metals advisory for October. But right now, our projections are that we think the price will trade between 22 and 28. So we don't necessarily think that we'll get to $30 yet this year, but we're looking for more sideways movement. Excellent. Jeff, I want to thank you so much for coming on the show today. Appreciate your thoughts. You're welcome. Thank you for watching Kitco News. I'm David Lin. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow me on Twitter at DavidLin_TV. Hello, I'm Larry Drummond, the Executive Director of the IPMI. I want to take this opportunity to introduce you to the IPMI's upcoming 45th Annual Conference, a hybrid experience. Our sessions will be held on October Kitco News special coverage. सो हम लोग यहाँ पे यामाहा के गोल्ड लॉन्ग टर्म विजन को देखने जा रहे हैं कि आगे हम लोग को कैसे देखने को मिल सकते हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग गोल्ड का मूव। तो हम लोग देखेंगे ये छोटी सी क्लिप। Coverage of the Denver Gold Forum is brought to you by New Pacific Metals. We're joined now by Peter Marrone, Executive Chairman of Yamana Gold, one of the largest gold producers in the world, virtually. Peter, I'm sorry we couldn't be here in person, but virtual interviews, in-person interviews, always a pleasure with you. Thank you for being here. Thank you. I'm happy to be here. Let's talk about production and your guidance. Now, your company is called Yamana Gold, but some investors might forget that you do have a sizable position in your proven and probable reserves in other metals as well. And of course, you do produce a lot of silver. So we'll be talking about production in all of these metals. I'd like to talk about recent developments in the US. President Joe Biden has announced that he would like 50%, up to 50% of the nation's energy production, electricity production, to be solar by 2050. Now, in the same week, the state of New York announced that they are banning the sale of petrol vehicles after 2035. So anything after 2035 has to be electric, sold in New York. So obviously, over the next few decades, there will be a huge increase in demand for certain base metals that fit the EV narrative. How do you see Yamana positioned to be a part of this? So here हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन और आगे की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके बाद हम लोग का गोल्ड हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। सो आगे की चीजें यहाँ पे Well, I think we're very elegantly positioned in that. We produce, look, David, if we could change the name of the company to Yamana Precious Metals instead of gold alone, and that would have some resonance with investors generally, and perhaps even from my lips to God's ears, increase our market capitalization and share price, I would willingly and gladly do that. The reality is that we produce mostly gold. We produce about 860,000 to 890,000 ounces. Okay, so here is talking about Yamaha Gold Incorporation. तो Yamaha Gold Incorporation के प्राइजेस हम लोग अगर पूरे चार्ट को एनालाइज करते हैं तो पूरी तरीके से डिक्लाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी तक अपना हाई $6 का बनाते हुए दिख रहे थे $6 के, और अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है 3.96 के लेवल्स पे. सो वेदर इफ इट वुड बी अप और इट वुड बी डाउन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड टेपरिंग की जो न्यूज़ेस आने वाली हैं उसके बेसिस पे हम लोग इस व्यूज को देख रहे हैं. Of gold, but we do produce between 8 and 10 million ounces of silver on an annual basis. Two of our mines produce doré that contains both silver and gold, and it is fundamental to the operation. It's not that we go some places where there's silver and some places where there's gold. It's gold and silver in these
epithermal vein systems. So we're very happy that we're producing that. It represents about 13 to 15% of our revenue and about that amount on our cash flows as well. We have copper content in the company as well, to boot. It's not in production, but our Mara project, you and I've discussed this before, but this is a low capital intensity copper gold molybdenum project that is going through the pre-development process of permitting and feasibility study. But this is a project that for at least 28 years, we estimate 28 to 30 years, the production platform is an average of 470 million pounds of copper per year. But in the first 10 years, that number exceeds 500 million pounds of copper per year, and we own 56.25% of it. So that's roughly 260,000 million, pounds of copper production per year. And that all of that would be generated at an all-in cost. तो इस बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कॉपर की भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है 2,60,000 बिलियन के अकॉर्डिंग हम लोग को कॉपर का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है और कॉपर अगर अपसाइड जाता है तो उस हिसाब से हम लोग के ऑयल के भी प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ हम लोग को गोल्ड भी एक बार अपसाइड अपने हाइस को ब्रेक करते हुए इस बार देखने को मिल सकता है बट उसके पहले जो हमारा हर्डल है वो 1950 टू 1960 का है इफ इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 1950 और 1960 देन वी कुड ट्रूली एक्सपेक्ट कि हम लोग को 2075 का जो हाई बनाते हुए दिखा था 2020 में ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो हम लोग को ब्रेक होते हुए मिले और आगे के सस्टेनेबल मूव पूरी तरीके से हाई जाते हुए दिखे. So roughly $1.40 per pound of copper. So it's a very elegant project. Right now, it's going through a process of feasibility study and permitting. We're already in progress on that. But one comment that I think is important here is people talk about pre-feasibility studies and feasibility studies, and then all the work that goes into the detailed engineering following a feasibility study. Well, in this particular case, what we did is we combined our Agua Rica project, which is a big open pit that has to be developed, with the Alumbrera plant and facilities, as Alumbrera as a mine came to the end of its mine life. We will conveyor ore from the Agua Rica pit to the Alumbrera plant. The combined project is now called Mara, but it's not just a name change. What it is a brownfield project. A brownfield project where the plant already exists, the ancillary buildings exist, tailing storage facility with capacity exists, a pipeline for the transport of concentrate to port already exists. Why that's important for investors to understand, it means that the project is significantly de-risked, the capex is significantly less. And so when we complete a feasibility study next year, a lot of the detailed engineering that normally follows within half a year to a year beyond that feasibility study will have already been completed. And that's what I mean by the advancement of this project to a brownfield rather than a greenfield project. Well, let's talk about your future plans now. You do have, I looked at your 2020 annual report. Okay, so here we are moreover discuss about other metals such as silver and all. So we are truly interested in gold itself. So we move to the clip which is truly dedicated to the gold, not for the other metals, because we are seeing this video so that so we are going through this. So here it is saying gold is stuck क्योंकि gold हमारा stuck इसलिए होते हुए दिख रहा है because हम लोग को लास्ट सेशन में 1754 के लेवल्स पे ओपनिंग देखने के बाद जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा देखने को मिले उसकी वजह से गोल्ड हमारा एक बार अपसाइड स्पाइक मारते हुए 1781 के लेवल्स को टच करते हुए दिखा बट उसके बाद तुरंत ही एक बार डाउनफॉल होते हुए दिखा और वापस से गोल्ड ने अपने इनिशियल पॉइंट और अपने लोस के आसपास अपनी क्लोजिंग बनाती हुई दिखी है. दैट सेज कि अपसाइड मार्केट में हम लोग को अभी भी बायर्स नहीं देखने को मिल रहा है और अभी भी करेक्शन का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है. तो आगे की मूवमेंट कैसे होगी उसके बारे में तो हम लोग जहाँ तक टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स वीक हैं बट अगर हम लोग इस टाइम की बात करें तो ये हमारा फेस्ट सीजन है बिकॉज वी आर सीइंग कि दिवाली का टाइम आने और दिवाली में मोस्टली मार्केट हम लोग को अपसाइड मूव करते हुए दिखती है. एंड हेयर वी आर सीइंग कि पॉसिबल है इस बार गोल्ड हमारा शाइन करते हुए ना दिखे और एक बार करेक्शन का जोन वापस से आते हुए दिखे. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस स्मॉल क्लिप. Even the big miss in the US September job numbers couldn't trigger a much needed rally in gold.
And unless the precious metal can find a way to close above 1780 an ounce, ओके, सो हियर इट इज सीइंग कि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि लास्ट डे हम लोग को फ्राइडे सेशन में क्या होते हुए देखने को मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ते हुए दिखे थे, बट स्टिल गोल्ड हमारा 1780 के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर वो 1775 1770 के आसपास भी क्लोजिंग दिया होता तो वी कुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि आगे का जो मूव है हमारा वो एक बार अपसाइड होता हुआ दिख सकता है और 1800 के टारगेट्स इट कुड डेफिनेटली टच। बट व्हाट हैपेंड लास्ट वीक? सो गोल्ड ने अपना 1781 का हाई बनाया, बट आफ्टर दैट व्हाट बेसिकली हैपेंड, गोल्ड इज डाउनफॉल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल एंड रीच्ड एट द लेवल ऑफ 1755 टू 56 इटसेल्फ। व्हाई इट वाज सो? क्योंकि 1780 के लेवल्स पे हम लोग को बायर्स नहीं देखने को मिले और सेलर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि बायर्स को पूरी तरीके से डिडक्ट करते हुए अपने प्राइजेस को एक बार वापस से मेंटेन किया एक लो लेवल पे। analysts say that they will remain neutral on the metal. Here's a look at Kika's top 3 stories of the week. At number 3, Bitcoin breaches 55,000 as bullish momentum grows in the crypto space. The positive headlines pushing prices higher are Fed Chair Jerome Powell and SEC Chair Gary Gensler saying that they have no plans. ओके ग्रेट। सो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखी थी। तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं बिटकॉइन का ट्रांसफ़र जो है हमारा चाइना में बैन होते हुए दिखा था, बट फेड चेयरमैन जेरोम पवेल ने कहा कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि बिटकॉइन में जो ट्रेडिंग है वो यूएस में बंद की जाए। ऑल्दो इट वाज बैन, इट इज़ बैन इन बेसिकली इन चाइना, और चाइना में हम लोग को सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब देखने को मिलता है बिटकॉइंस का। बट इट हैज़ शट इट। एंड अगर हम लोग यूएस की बात करें तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बैन इज़ नॉट देयर फॉर स्टिल नाउ ऑनवर्ड्स, अभी के लिए नहीं है। और अगर आगे कुछ होते हुए दिखता है तो वी कुड सी फाइनेंशियल मिनिस्टर की रिपोर्ट्स और आगे के डेटाज और न्यूज़ एनालिसिस जो कि हम लोग डेली देखते हैं। सो उससे हम लोग को देखने को पता चलेगा। बट फिलहाल देयर इज़ नॉट एनी न्यूज़ टू बैन बिटकॉइन इन ट्रेडिंग इन द यूएस। To ban or restrict Bitcoin trading. Also, the investment firm founded by billionaire George Soros admitting that it owns some Bitcoin. Okay, that was particular good news because okay, great. So we are moving towards this section. Just holding minutes. Just to hold a while, and we are discussing some important data. Okay. Trading. Also, the investment firm founded by billionaire Yeah, this was the news कि investment firm founded by the billionaire George Soros admit its own some Bitcoin. तो this was the particular reason कि हम लोग को देखने को मिला जॉर्ज सोरोस ने पूरी तरीके से एडमिट किया कि उसने खुद ही कुछ बिटकॉइंस ओ करके रखे हुए हैं और बैन की उम्मीद अभी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो दे पर्टिकुलरली रिफ्यूज्ड हिज ओनिंग फ्रॉम द बिटकॉइन इटसेल्फ। George Soros admitting that it owns some Bitcoin. And with inflation fears back at the forefront, Bitcoin seems to be winning the status of the favorite in ओके, सो ईयर टू डेट अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें व्हाट इज ईयर टू डेट, तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर में जो रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं उसमें पर्टिकुलरली क्या डिफरेंस है। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग इस साल की अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन हमारा 87% से अप होते हुए दिखा है ऑलमोस्ट। और गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड इज डाउन बाई 7% इटसेल्फ, क्योंकि हम लोग को लास्ट लॉकडाउन में गोल्ड एक बार बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ अपसाइड मूव करते हुए दिखा था 2075 का हाई बनाते हुए, और फिलहाल 1700 की रेंज में मूव करते हुए दिख रहा है। दैट इज 7% डाउन फ्रॉम इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस लास्ट ईयर। एंड अभी हम लोग देख लें तो बिटकॉइन हमारा 87% से ऊपर है। inflation hedge asset, while gold is being left behind. Year to date, Bitcoin is up 87% and gold is down 7. At number 2, September US job growth was the slowest this year. ओके, सो हम लोग जॉब ग्रोथ की बात करते हैं तो हम लोग को फ्राइडे को जो डेटा देखने को मिले थे, यूएस इकोनॉमी एडेड ओनली 194,000 पोजीशन वर्सेस द एक्सपेक्टेड 500,000। ओके, सो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एम्प्लॉयमेंट जो डेटा होगा वो 500,000 से हम लोग को एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिखेगी, बट वो 500 की बजाय 195 से ही 194,000 से ही बढ़ती हुई दिखी, जिसकी वजह से गोल्ड एक बार
अपसाइड रेस करते हुए दिखा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स घटने की वजह से गोल्ड एक बार स्पाइक के साथ 1780 के लेवल्स बनाते हुए वापस से देखने को with the मिला। economy only adding 194,000 positions versus the expected 500,000. This potentially complicates the Federal Reserve's intention to start tapering as soon as November. यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि फेड की जो हम लोग को देखने को मिली है टेपरिंग की न्यूज़, तो क्या वो सीरियसली नवंबर में होने वाली है या नहीं? अगर होती है तो उसके बाद गोल्ड एक बार एक डायरेक्शन में मूव लेता हुआ दिख सकता है, इधर अप और डाउन। In an immediate reaction to the data, gold jumped more than $20. But all this euphoria proved temporary, with the precious metal losing all of its gains as treasury yields rose and pressured gold back down. ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस न्यूज़ की वजह से गोल्ड हमारा $20 से ऊपर होते हुए दिखा था, लेकिन जैसे ही हम लोग को एशियन सेशन ओपनिंग का टाइम देखने को मिला तो यूएस ट्रेजरी यील्ड वापस से अप होती हुई दिखी और हमारा जो डॉलर है वो एक बार वापस से 94 के लेवल्स पे अपने हाई पे आते हुए दिखा, जिसकी वजह से वापस से एक बार गोल्ड हमारा करेक्शन की ओर जाते हुए दिखा हमें। And coming in at number 1, not everyone is giving up on gold. Bloomberg Intelligence says that the precious metal will revisit its ओके, सो हम लोग यहाँ पे अगर ब्लूमबर्ग की इंटेलिजेंस की बात करें तो ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के हिसाब से गोल्ड अपने पीक को जल्दी ही देखने को मिल सकता है, सॉरी। और इसकी वजह से गोल्ड एक बार अपना स्पाइक मारते हुए अपने हाईएस्ट को ब्रेक करते हुए भी देखने को मिल सकता है। peak at above $2,000 an ounce in a relatively short time. Jefferies Group is also bullish on gold, stating that gold and Bitcoin remain essential hedges against the growing threat of stagflation, which is an environment of slower growth and higher prices. Analysts at the investment bank say their long-term forecast for gold is to push above $5,000 an ounce. ओके, सो लॉन्ग टर्म फोकस की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड की फोकस जो हम लोग देखने को मिल रहे हैं 5500 एन आउंस के भी रेट से गोल्ड हमारा ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। That's a look at our top 3 stories of the week. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, and for more headlines, check out kiko.com. ओके, सो ये रही हमारी कुछ न्यूज़ कि गोल्ड स्टक होते हुए दिख रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उम्मीद है कि एक बार वापस से अपसाइड दिखाते हुए गोल्ड हमारा 5500 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है। तो हम लोग एक बार अपने डेटा पे आ जाते हैं और गोल्ड का मूव देखते हैं, तो गोल्ड हमारा पर ईयर बेसिस पे अपने रिटर्न्स तो बहुत अच्छे देते हुए दिखता है। एक बार हम लोग मंथली डेटा देख लेते हैं, तो मंथली डेटा के बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथली गोल्ड ने हमेशा लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग अच्छे ही रिजल्ट दिखाते हुए दिखा है। और 3rd ऑफ अगस्त 2020 की बात कर ले तो अपने हाईएस्ट पे था और अभी पूरी तरीके से करेक्शन दिखाते हुए मिल रहा है। बट जिस तरीके से अगर हम लोग मंथली डेटा देखें तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है और वापस से एक बार स्पाइक आती हुई दिख सकती है। तो अगर कोई करना चाहे तो करंट लेवल से होल्ड करके रख सकता है अपने गोल्ड को और उसके बाद वापस से एक बार स्पाइक के साथ गोल्ड हम लोग को $5500 के आसपास देखने को भी मिल सकता है। तो अगर करंटली लेवल से हम लोग होल्डिंग करते हैं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि अगर उस लेवल पे जाता है तो इट वुड गिव अस वेरी गुड रिटर्न्स। वन डे कैंडल की बात करते हैं तो वन डे कैंडल देख सकते हैं 56.67 के लेवल्स पे पूरी तरीके से देखने को मिल रही है, एक तेजी के बाद वापस से थोड़े करेक्शन दिखाती हुई। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन फॉर्म करें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो गोल्ड हमारा अभी भी डाउन होते हुए दिख रहा है, देख सकते हैं जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है अभी तक। और इसको ऊपर जाने के लिए 1900 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बार ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। और टिल नाउ देख सकते हैं अभी इस लेवल पे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाते हुए दिख रहा है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या बोलता है कि प्राइजेस एक बार करेक्ट होते हुए दिख सकते हैं हमें।
गोल्ड न्यूज रोटर्स की बात करते हैं. सो प्रीशियस गोल्ड रैली कूल सॉरी वी आर हाँ really cools as traders look past job missing to the looming Fed taper. So US gold job slows sharply in September. Platinum sees best week since June 25. Palladium snaps four straight weeks of decline. Gold paired gained on Friday after rising more than 1% on US jobs data miss. As investors came to terms with the possibility the Federal Reserve could still have enough fodder to wean the economy of stimulus this year, spot gold was up 0.2% at $1758.86 per ounce by 1:47 p.m. EDT after hitting 1781.20, its highest level since September 2020. US gold futures settled down 0.1% at $1757.4. US employers added just 194,000 jobs in September, well below expectations. But upward revisions to the prior month's data mean the economy had now made up for half of the jobs deficit faced in the December. Gold gained sharply as the data at the first appeared to the downbeat, but internals of the report seems overall to be not so bad. This drove expectation that the Fed will continue on its path of wanting to taper monetary policy sooner rather than later, leading to the retreat in the gold. Although yet another poor jobs report next month could change that. Gold was also caught between headwinds from the higher US Treasury yields and some support from a slightly weaker dollar. The gold market now seems to expect a tapering announcement at some point this year. However, the downside appears well supported given the demand response from the physical market. Reduced stimulus and high interest rates lift bond yields, translating into increased opportunity cost of holding non-yielding bullion. For the gold narrative to really pick up again, we would need an impulsive rally above 1950 to 1960 or the pre-COVID vaccine highs, and that would require a significant catalyst not in the market right now. But auto catalyst, platinum and palladium gained hold on to gains, rising 4.1% to $1,019.74 and 5.8% to $2,073.52 respectively, likely buoyed by the positive fine print in the jobs report. Spot silver rose 0.5% to $22.70. MT4 टर्मिनल का लुक देखते हैं तो वन डे कैंडल पे भी देखें तो प्राइसेस अपने अपर बैंड को क्रॉस करते हुए वापस अपने मिड बैंड पे आते हुए दिखे हैं, और जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसी ये तेजी का संकेत तो हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर तेजी का संकेत होता तो प्राइसेस एक बार जरूर से जरूर हम लोग को अपसाइड ही क्लोज होते हुए दिखते. 1770 1780 के आसपास अगर क्लोजिंग होती तो हम लोग उम्मीद कर सकते थे कि एक बार अपसाइड मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है. सो आज के लिए हमारी साइड से इतना ही. अगर आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू एनी टूल, एनी टेक्निकल एनालिसिस, एनी न्यूज़, एनी डेटा, आगे के सेशंस, तो आप लोग चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. चैट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल. और अगर आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सो काइंडली प्रेस 30 इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोग आज का सेशन यहाँ पे एंड कर सके. Sharply in September, platinum sees best week since June 25. Palladium snaps four straight weeks of the Friday after rising more than 1% on US jobs data miss. As investors came to terms with the possibility the Federal Reserve could. I'm waiting. If there is any query from your side, you can just mention in the chat box so that we can clear of that, or else type 30 to end with this session right here. US gold futures settled down 0.1% at $17.57. US employers added just 194,000 jobs. ओके, सो आई होप आप लोग की साइड से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा. सो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे. वापस से कल से मिलेंगे और देखेंगे कि मार्केट का मूव कैसा है, कैसी न्यूज़ आती हुई दिख रही है, चेंजेस कैसे हैं, और डिस्कस करेंगे, अपनी ट्रेड भी लेंगे अच्छी खासी. सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई एम एंडिंग दिस सेशन राइट हियर राइट नाउ.
Thank you so much for joining and concentrating and for your precious time.